Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed the reactivity series and some properties of metals with acids. Now we're going to discuss the extraction of metals. Metals आपको कहीं भी सड़क चलते नहीं मिलते. Metals आपको extract करने पड़ते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी और से. यानी कि metals are formed in the impure form state and we are going to extract them pure. Right? So let's start with the animation. Available only in combined forms as ores. मेटल्स किसी न किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइंड फॉर्म में होते हैं. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इजी है. हमारे पास जो आयरन होता है, आयरन आपको रास्ते में जाते हुए कहीं सड़क में पूरा का पूरा टन भर के मिल नहीं जाता. आपको आयरन कहीं ना कहीं से एक्सट्रैक्ट करना होता है. आयरन के दो और आपने देखे होंगे, Fe2O3, यानी आयरन जो होता है ऑक्सीजन के साथ मिक्स्ड फॉर्म में होता है, राइट. आयरन ऑक्साइड और एक होता है Fe3O4. ये दो फॉर्म में होते हैं. एक को बोलते हैं हीमेटाइट, एक को बोलते हैं मैग्नेटाइट, राइट. अब जरा देखें यहाँ पे, इसी तरह कॉपर होता है, इसी तरह गोल्ड होता है. एल्यूमिनियम भी होता है. एल्यूमिनियम भी आपको इस फॉर्म मिलता है Al2O3 एल्यूमिना के फॉर्म में. यानी कि सब किसी न किसी मेटल किसी न किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं. अब उन्हें क्या करना होता है, उन्हें एक प्रॉपर तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी. दैट मीन्स व्हाट? मेटलर्जी का मतलब होता है टू एक्सट्रैक्ट प्योर एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स इम्प्योर ओर. To obtain the pure forms of these metals, we need to extract them from their respective ores. Based on the reactivity displayed by metals, they can be extracted through the following methods: reduction and electrolysis. Reduction is the process of removal of oxygen for extraction of metals from their oxide ores. The common reducing agents used for reduction of metal oxides are carbon monoxide, carbon, hydrogen. For example, iron oxide is reduced to iron by carbon monoxide. Iron oxide is reduced to iron using carbon as the reducing agent. Similarly, copper oxide is reduced to copper using carbon. Copper oxide is reduced to copper using hydrogen. अगर इस पॉइंट को देखें, मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है तो कैसे किया. अब मेटल आपको निकालना है, कहाँ से हमें निकालना है? FeO, आयरन की ऑक्साइड से मेटल आपको प्योर निकालना है. Fe क्या है? Fe प्योर आयरन है, राइट. तो ये प्योर फॉर्म है, तो प्योर फॉर्म ऐसे मिलता ही नहीं, करेक्ट. इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको किसी न किसी दूसरे केमिकल से रिएक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट. तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूस कर देगा आयरन को. रिडक्शन का मतलब होता है, याद करो हमने समझाया था, रिडक्शन मीन्स व्हाट, फिर समझा दे रहे हैं. रिडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन, करेक्ट. रिडक्शन के तीन टर्म होते हैं, तीन तरीके से रिडक्शन देखा जाता है, याद रखें. रिडक्शन का मतलब होता है, ध्यान से देखें, आइदर यू आर एडिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो रिडक्शन के तीन मतलब हैं. इसका उल्टा कर दोगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा. जो आपने रिडक्शन में रिमूव किया है, ऑक्सीडेशन में उसे ऐड कर देते हैं, करेक्ट. और जो रिडक्शन में आपने रिमूव किया है, याद रखना, जो रिडक्शन में आपने रिमूव किया है उसको ऑक्सीडेशन में ऐड कर देंगे, और जो आपने यहाँ पर ऐड किया है वो ऑक्सीडेशन में रिमूव कर देंगे. इजी पॉइंट है, याद रखें. इन्वर्स रिलेशन लगा देंगे तो सारी चीज़ें उल्टा हो जाएंगी. अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है यहाँ पर कि FeO, iron is in the combined state with oxygen. Reacting with carbon monoxide, it gives pure iron and carbon dioxide gas is released out. Right? तो क्या बोला आपने? Iron oxide is reduced to iron by carbon monoxide. Of course. Next point is, iron oxide is reduced to iron using carbon as reducing agent. Now the agent is what? See, here आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस मीन्स आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना, ऑक्सीजन हटा दिया ना. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से, किसी भी कंपाउंड से कोई ऐसा एजेंट आया जिसने इसके ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो क्या हो गया? प्योर हो गया ना. ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गई, और जो ऑक्सीजन गई तो कहाँ गई? कार्बन मोनोऑक्साइड ने कैप्चर कर ली ना. कैप्चर करके खुद क्या हो गया? याद रखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. फर्स्ट पॉइंट, reducing agents
itself gets oxidized and oxidizing agents itself get reduced. 2 पॉइंट याद रखेंगे. एक आपने कहा ऑक्सीडेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, इसने ऑक्सीजन निकाला ना आयरन से ऑक्सीजन निकाल दिया, लेकिन खुद इसका ऑक्सीजन ले लेगा ना. तो देखो जो कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड था, अभी बन गया कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे दो चीज़ें, दो रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं. प्लस CO था, कार्बन मोनोऑक्साइड था ना, आपने क्या बनाया, आयरन और CO2. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखो. इसको और इसको देखो, आयरन ऑक्साइड से आयरन बना, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, करेक्ट. और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गई ना एक, तो इसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन हुआ. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या कही जाती है, इसको बोलते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन. क्या बोलेंगे, रिडॉक्स. ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों ही कंडीशन दिखाई पड़ रहे हैं तो उसे बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. अब एक पॉइंट देखें, एक तो ये हो गया, दूसरा है आयरन ऑक्साइड. अब इस आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए आया है कार्बन, केवल कार्बन से भी कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कार्बन ने इसके ऑक्सीजन को निकाल लिया, खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और आयरन को फ्री कर दिया, तो प्योर आयरन मिल गई ना. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से आप कॉपर ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर सकते हो, देखें कॉपर फ्री कर दिया. इसी तरह ये देखो हाइड्रोजन, सीधे सीधे हाइड्रोजन गैस से प्रोवाइड करा दिया ना, लिखा ना कार्बन ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर यूजिंग हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन ने भी क्या कर दिया, ऑक्सीजन को खींच लिया अपनी तरफ, तो क्या बन गया, खुद तो वाटर बन गया, यानी ऑक्सीडाइज हो गया ना. हाइड्रोजन को खुद का ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर अलग हो गया ना, तो ये प्योर हो गया कॉपर. तो आपने देखा यहाँ से आपने दो रिएक्शन आपको पढ़ने को मिल गई, एक ही एलिमेंट से आयरन को किया और उसी तरह हमने हाइड्रोजन के लिए किया, राइट. आयरन को भी कार्बन मोनोऑक्साइड से कराया और कॉपर को भी करा दिया कार्बन से. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहीं पर. The metals high up in the activity series are very reactive. Hence, they cannot be obtained from their compounds by heating with common reducing agents like carbon, carbon monoxide, and hydrogen. For example, a reducing agent like carbon cannot reduce the oxides of metals like sodium, magnesium, calcium, and aluminium because they have more affinity for oxygen than carbon. Therefore, these metals are refined by another method known as electrolysis. Electrolysis is the process of the decomposition of a substance by passing electricity through it in a molten or dissolved state. Consider magnesium chloride ore. Magnesium is highly reactive and therefore cannot be reduced by common reducing agents like carbon, carbon monoxide, and hydrogen. Therefore, magnesium is extracted by electrolysis. Electrolysis of fused magnesium chloride gives magnesium at cathode and chlorine at anode. During the reaction at cathode, the reduction of magnesium chloride occurs due to gain of electrons. Magnesium ions gain electrons forming magnesium atoms. Note the points. During the reaction at anode, chloride ions get oxidized due to loss of electrons. Thus, chloride ions lose electrons to form chlorine atoms. Chlorine atoms combine to form chlorine molecules. Thus, as a result of electrolysis of magnesium chloride, magnesium metal is deposited at the cathode and chlorine is liberated as a gas at the anode. Pause the video and write down all the things in this slide. Extraction of metals by electrolysis. Everything is given over here. Make the diagram and the equation, left and right hand side both. Now, let's now take up aluminium, a well-known metal in the activity series, and analyze its properties as well as the method for its extraction. Aluminium is a highly electropositive element and so forms positive ions. Therefore,
It is placed towards the top and below magnesium in the activity series. It is not viable to use carbon reduction as a method for extraction of aluminium because the metal needs to be heated to very high temperatures in this method. Therefore, aluminium is extracted from its ores using electrolysis. Note the points. Important ores of aluminium are bauxite, represented by the formula Al2O3 2H2O, corundum, represented by the formula Al2O3, and cryolite with the formula Na3AlF6. These are the ores of aluminium. Write down all of these: bauxite, corundum, and cryolite.